अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैर आफियत से हो। जहाँ पर भी अल्लाह ताला आपको सही सलामत रखे। 4 और 5 मिनट की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होगी क्योंकि इसमें हम कतर के ऊपर जो बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया गया फ्रॉम इजरायली जेट्स, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द पर्सपेक्टिव, द ओवरऑल पर्सपेक्टिव एंड हाउ इम्पोर्टेंट कतर हैज़ बीन एज एन इंटरनेशनल आर्बिट्रेटर, जिसने बहुत बड़ी बड़ी डील्स को ब्रेक किया और बड़ी बड़ी जो कॉन्फ्लिक्ट्स थी, बड़ी बड़ी जो पीस डील्स थी, उनको वहाँ पर ब्रेक किया. एंड दो आई वाज वन ऑफ द pivotal place where many of the conflicts were basically resolved, and Doha has been played one of the pivotal role in bringing those two parties into the table of reconciliation and trying to convert the unfavorable situations into the favorable situations. तो कतर जो है सबसे पहले हम देखेंगे कि 1990 से एक पिवटल रोल अदा कर रहा है, जिसके अंदर उसने सबसे बड़ी जो डील ब्रेक की थी वो थी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और अफ़गानिस्तान की तालिबान के दरमियान. जैसे आपको पता है कि जो अफ़गानिस्तान के अंदर अमेरिका की जो जंग चल रही थी, एंड दैट्स बीन गोइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, एंड दैट अल्टीमेटली रिजल्टेड ए हैवोक ऑन द कंट्री लाइक अफ़गानिस्तान, जहाँ पर उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, उनकी जो रोड्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, स्कूल्स हैं, and the casualties at the mass level were absolutely devastation for the whole country. तो अब ये बहुत बड़ा मसला ये जो है ना बन गया था, एक ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी बन गई थी. एंड अल्टीमेटली इट वाज दोहा एंड कतर दैट प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन ब्रिंगिंग द टू पार्टीज इनटू द टेबल ऑफ रिकन्सिलेशन, जहाँ पर दोनों पार्टीज़ ने अपनी डिफरेंस को दूर करके उस जंग का इख्तिताम किया गया था. तो वी अल्टीमेटली हैज़ टू गिव दिस क्रेडिट टू कतर, वेयर कतर ने एक बहुत ही बड़ी एक संगीन जो सूरत हाल ह्यूमन पर्सपेक्टिव से थी कंट्री के अंदर, जहाँ पर एक डिविस्टेटिंग जो वॉर चल रही थी, एंड कतर वॉज बेसिकली एबल टू ब्रिंग एन एंड टू दैट वॉर. तो दूसरी जो थी बड़ी बड़ी जो पीस डील्स ब्रेक की गई थी, and it was Lebanon, it was about Yemen, it was a peace deal of Darfur, and it was a peace deal of Palestine also. तो कतर ने उनमें भी कलीली किरदार अदा किया था उन पीस डील्स को बेसिकली इंश्योर करने के लिए. इसके साथ साथ कतर ने बहुत सारी पोलिटिकल ऑफिस होल्ड किए, जिसमें हमास का भी पोलिटिकल ऑफिस जो हेडक्वार्टर्स थे, एंड दैट वर डन विद द negotiations and bargaining with Israel and America also, that these political headquarters and the political groups were basically hosted in Doha for the negotiations, for the constitutions, for the bargaining, for the discussions, obviously to bring an end to those international disputes which are prevailing in Palestine and elsewhere in the world. Qatar ने सपोर्ट किया इंटरनेशनल सिक्योरिटी के जो इनिशिएटिव्स थे. कतर ने एक बहुत बड़ा रोल उनमें भी अदा किया, जब जो भी डेवलपमेंट वर्क्स थे या ह्यूमन राइट्स की जो इश्यूज थे, इनको कम्बैट करने के लिए, या जो भी एग्जिस्ट हो रही थी चेंजेस, उनको कम्बैट करने के लिए कतर हैज़ बीन प्लेइंग ए पिवटल रोल इन सपोर्टिंग द UN इंटरनेशनल सिक्योरिटी इनिशिएटिव्स बेसिकली. तो उसमें भी कतर ने एक बहुत बड़ा, कतर की जो इकॉनमी है वो आपको पता होना चाहिए कि दैट इज़ एब्सोल्युटली backed by the national gas is one of the high economy है गल्फ में, and Qatar is one of the largest exporter of the liquefied natural gas, जो कि वर्ल्ड में एक बहुत बड़े पैमाने पे इसका इस्तेमाल होता है. So from that perspective also, if we need to understand, Qatar is one of the largest exporter of the liquefied natural gases is concerned, that's been basically used to emit the carbon dioxide. इसके साथ साथ आपको पता है कि 9 सितंबर 2025 में 3:46 PM पे इसराइल के जेट्स ने कतर पे 10 बैलिस्टिक मिसाइल से अटैक किया था. एंड जो आईडीएफ थी इसराइल की, उन्होंने अपने जेट्स को यूज़ करके रेजिडेंशियल कंपाउंड्स जो हमास बेसिकली वहाँ पर जो हमास के हेडक्वार्टर्स हैं उनको टारगेट किया था. जो वादी रौदान स्ट्रीट है दोहा पे, तो वहाँ पर उन लोगों ने टारगेट किया था. इसमें 8 इसराइल के F-15 जेट्स थे, फाइटर जेट्स वो यूज़ हुए थे, और 4 F-35 जो जेट्स फाइटर जेट्स से उन्होंने तकरीबन रेड सी से इनको इन मिसाइल्स को, बैलिस्टिक मिसाइल्स को दागा था, जो कि बेसिकली एम थे दोहा के लिए. अटैक बेसिकली जो था, इट वाज एज वन ऑफ द फर्स्ट अटैक ऑन द independent and sovereign country
the member state of the Gulf Corporation, which was considered to be one of the serious confrontation, one of the serious aggression from, from the Israeli perspective, basically, to carry such an onslaught on one of the sovereign country, and especially a country which has been one of the pivotal country in hosting, in bringing, and in arbitrating many conflicts which were existing in the world, and to bring an end to those those conflicts, those miseries, and those catastrophes, and those unfavorable situations were basically converted to a favorable situation for those countries which were affected adversely by these conflicts are concerned. इसके साथ साथ जो हमास के हेडक्वार्टर्स थे तो उनको बेसिकली होस्ट किया गया था, तो इनको सिग्निफिकेंटली डैमेज की गई थी, बट दे आर नॉट कम्प्लीटली डिमोलिश्ड एज सच. और कतर का जो राडर सिस्टम है बेसिकली वाज नॉट एबल टू पिक दोज व्हाट यू कॉल इज और डिटेक्ट दोज जेट्स और द मिसाइल्स आर कंसर्न. And we need to also remember and know the fact that Qatar is basically using the US Patriot air defense system. So that's one of the very irony of the situation as to why this US Patriot defense system was not able to pick those or detect those jets or the ballistic missiles when they were basically launched from the Red Sea is considered. इसमें 6 कैजुअलिटीज़ हुई थी ऑफिशियल्स की, जो उनकी फैमिलीज़ हैं. So this has now been considered as one of the serious confrontation, and there is going to be ultimately the repercussions, and all the Muslim states, the heads of the states have been basically called to have the negotiations, the basically the discussions as to how we are going to counter the Israel's onslaught, because Israel is doing now at will attacking any country, any sovereign state without taking care of the international laws or the international considerations, the relations are concerned. तो इसके लिए बहुत ही जो है सारी गल्फ की countries हैं along with the other Muslim states are going to basically combine together on 15th of September in Doha. Basically they have been called by the head of the Doha, तो इस कतर के अमीर ने उनको बुलाया है, and there are going to be a serious discussions कि जो इसराइल का जो ये एक as an aggressor, एक onslaught है on the Muslim world, how this is going to be stopped, and what strategies are going to be basically developed, and what considerations are going to be discussed. We're going to see them in the next few inshallah days, and going to keep you updated. But this was one of the serious confrontation, one of the serious escalation, one of the serious especially on a country which has been playing a very pivotal role in hosting the discussions, the arbitrations, the reconciliations of the disputes which are happening in the Middle East or somewhere else or in Asia. And that was something that was absolutely condemnable. We're going to see you next time. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.